Morning, students. So once again, welcome back for social science live classes. Okay, and just because I had some work and urgent, so I was not able to take your live classes on Monday and Tuesday. Okay, so just sorry for that first. And so today, once again, we are here, and as all of you knows that currently we are discussing in our subject geography chapter number 4. Okay, the chapter number 4 is what? Agriculture. Okay, so what is the chapter number 4? Chapter number 4 is agriculture, and we have already discussed many things in this chapter. Okay, so we have started this chapter with discussion on the types of economic activities. So we did for primary activity, secondary activity and tertiary activity. Okay, and then we discuss about the agriculture. Okay, in a general terms. Then we started discussing on agriculture as a farm system. Okay, then we also have discussion on some of the other activities which could be done. We have also discussed some of the other activities which could be done along with, okay, which could be done along with agriculture. So we have a small discussion about agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture and हॉर्टिकल्चर. ठीक है, तो हमने इन सभी चीजों के बारे में क्या किया था? डिस्कशन. ओके, देन वी हैव स्टार्टेड द डिस्कशन ऑन टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है, सो we have the two major, I am again telling you, we have the two major, okay, classification in types of farming. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हमने दो मेजर क्लासिफिकेशन पढ़े थे. ठीक है, वो दो मेजर क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है, व्हाट आर दीज टू क्लासिफिकेशन? These two classifications are subsistence farming and commercial farming. जो दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे वो कौन कौन से दो क्लासिफिकेशन थे हमारे? सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग. ठीक है, अब सबसिस्टेंस फार्मिंग में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, so subsistence farming again can be divided into two categories: intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. In these two we have already discussed about the intensive subsistence farming. ठीक है, तो इन दोनों में से हम ऑलरेडी इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ चुके. ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या बचा है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद primitive subsistence farming, and once it is being over then we will start with one more type of farming, that is commercial farming. ठीक है बेटा. now so primitive subsistence farming, the first important thing about the primitive subsistence farming is what? It is being done. It is being done through. It is being done through all the old methods. Okay, now when we say all the old methods means खेती करने के जो तकरीबन 100-150 साल पहले के जो तौर तरीके हैं, खेती करने के जो 100-150 साल पहले तक के जो तरीके हैं, यानी पिछले
70, 80 या 100 ईयर्स में, पिछले 100-150 सालों में एग्रीकल्चर के जो भी नए नए तरीके डेवलप हुए हैं, उन नए तरीकों का इस्तेमाल, उन नए तरीकों का यूज किसमें नहीं होता? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में नहीं होता। ओके, सो इट इज बीइंग डन थ्रू ऑल द ओल्ड मेथड्स। किसके जरिए? पुरानी मेथड्स के जरिए किया जा रहा है। गॉट इट? ओके, सो इट इज बीइंग डन थ्रू ऑल द ओल्ड मेथड। जो भी पुराने तौर तरीके हैं, उसके जरिए क्या किया जा रहा है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया जा रहा है। ठीक है? देन सेकंड, ओके, सो व्हाट डज इट मीन्स? No modern method or input. No modern method or input is used. ठीक है? कोई भी मॉडर्न मेथड या इनपुट का इस्तेमाल नहीं। Getting the point of it? No modern method or input is used. ठीक है? सो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का यूज है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, इसमें से किसी भी टेक्नोलॉजी का, किसी भी इनपुट का, किसी भी मॉडर्न मेथड का यूज नहीं होगा। और जब फार्मिंग पुराने तरीके से होगी, कोई भी मॉडर्न मेथड और इनपुट यूज नहीं होगा, देन व्हाट हैपेंस? जब पुराने तरीके से खेती होगी, कोई भी मॉडर्न मेथड यूज नहीं होगा, देन व्हाट हैपेंस? द ओवरऑल प्रोडक्शन, ओके, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट इज वेरी लेस। ठीक है? अब कोई भी मॉडर्न इनपुट यूज नहीं हो रहा है ना, खेती करने के तरीके पुराने हैं, जो सीड्स हैं, बीज जितना भी है, बीज की क्वालिटी भी कैसी है? पुरानी है। ठीक है? तो पुराने बीज हैं, पुराने तौर तरीके हैं, कोई भी मॉडर्न मेथड का यूज नहीं हो रहा है, देन व्हाट हैपेंस? In that case, the overall production or output is very less. ठीक है? ओवरऑल प्रोडक्शन यानी खेती से जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो कैसा होगा? बहुत कम होगा। Got it? So these are the three, okay, main features as far as concerned about the primitive subsistence farming. ठीक है? ये क्या हो गए? मेन फीचर। ओके, वन मोर वी कैन से, ठीक है, ओनली लेबर फ्रॉम फैमिली इज mostly working. Okay, so only labor from family is mostly working. परिवार से सिर्फ क्या? जो लेबर है, यानी इतना उत्पादन कम है और इतने पिछड़े तरीके से खेती कर रहे हैं कि नेचुरल है, घर में कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति तो होगा नहीं। ठीक है? तो क्या हो रहा है? सारे के सारे घर के ही लोग फार्मिंग में लगे हुए हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस? ओनली लेबर फ्रॉम फैमिलीज मोस्टली वर्किंग। परिवार के लोग ही उस खेती पर क्या कर रहे हैं? काम करते। ठीक है? नाउ दीज आर व्हाट द जनरल फीचर ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये चार जो हैं वो क्या हैं? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के जनरल फीचर हैं। ठीक है बेटा? अभी यही का यही टॉपिक
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, हाँ, सेम का सेम टॉपिक, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, और फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी दो डिफरेंस है ना, कौन कौन से, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव। तो ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग का बेटा, यही का यही हमें 10th स्टैंडर्ड में फिर से पढ़ने को मिलेगा, ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर कौन सी क्लास में, 10th में, ठीक है। तो उसमें भी यही का यही टॉपिक पढ़ना है हमको, ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, ठीक बेटा। हालांकि उस क्लास में डिस्क्रिप्शन थोड़े से लिटिल बिट डिफरेंट होंगे, क्योंकि बड़ी क्लास है ना, तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कैसा होगा, डिफरेंट होगा, परंतु 85% चीजें ऐसी की ऐसी ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? ओके बेटा, सो प्लीज अभी इसको और अच्छे से समझ। नाउ दिस इज व्हाट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फॉर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। अभी एज ऑन टुडे, आज के तारीख में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज डन इन 2 वेज, ठीक है। यानी जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसमें आजकल जो फार्मिंग का तरीका है उसमें दो चीजें इंक्लूड हैं, ओके, दैट इज द टू वेज ऑफ डूइंग फार्मिंग। आई एम अगेन रिपीटिंग, द 2 वेज ऑफ डूइंग फार्मिंग। I am again repeating, the 2 ways of doing farming are included. The 2 ways of doing farming are included in primitive subsistence farming. ठीक है? So दो चीजें primitive subsistence farming में include होती हैं. One of the thing is what? Shifting cultivation. Okay, so 2 things are included in primitive subsistence farming. Okay, one of the thing is what? Shifting cultivation, and second thing is what? Nomadic herding. ठीक है, तो पहली चीज जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, दैट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज इंक्लूडेड विद 2 टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस। ओके, द वन प्रैक्टिस इज व्हाट? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एंड सेकंड इंक्लूड्स व्हाट? नोमैडिक हर्डिंग। ओके, सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस विद फर्स्ट द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, सो what are the features? So what are the features? So the first feature is what? It is being done. Okay, so what is shifting cultivation? It is being done in thickly forested area by tribals, ठीक है। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, आदिवासी पॉपुलेशन जो है, वो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, खेती करने के तरीके को करती है। कहां पर? थिकली फॉरेस्टेड एरियाज, ठीक है। जो घने जंगलों वाले इलाके हैं, घने जंगलों वाले इन इलाकों में क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, ठीक है। सो विच आर द एरियाज where this shifting cultivation is done? It is being done in the area of Amazon basin, then
ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो यदि हम इंडिया की बात करें, कहाँ की बात करें बेटा, इंडिया की। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो मेथड है वो छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ इलाकों में अभी भी चल रही है। ठीक, और सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस कहां पर हो रही है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो व्हाट इज नॉर्थ ईस्ट रीजन बेटा, इंडिया का बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन इज व्हाट, द 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ओके, आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ओके, मिजोरम। तो ये जो स्टेट्स हैं, इन दीज स्टेट्स, ओके, still the shifting cultivation practice is done. Okay, now so it is being done in thickly forested area by tribals. Okay, so old tools and methods are used. ठीक है, खेती करने में पुराने औजार और पुराने तौर तरीकों का यूज होगा। ओके, सो ओल्ड टूल्स एंड मेथड्स आर यूज्ड। व्हाट आर बीइंग यूज्ड, ओल्ड टूल्स एंड मेथड्स आर यूज्ड। ठीक है, पुराने तौर तरीकों का यूज होगा। Got it? Now, in this shifting cultivation, and this we have already done in our subject history also, chapter 4. ठीक है, उसमें भी हमने ट्राइबल के बारे में पढ़ा था। There was a question, what is shifting cultivation? Okay, so old tool and methods are used. Now, what is done? Okay, a plot of land is cleared. What is being done beta? A plot of land is cleared. ठीक है, जमीन के टुकड़े को क्या करते हैं, पेड़ काट के साफ करते हैं। ठीक है, so plot of land is cleared, okay, by felling the trees। ठीक है, तो पेड़ों को काट करके जंगल में जमीन का एक टुकड़ा साफ करेंगे। ठीक है, the useful timber is taken out। So what is to be done? The useful timber is taken out। जो यूजफुल टिम्बर है, काम की जो लकड़ी है, वो क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। ओके, remains will be burned। ठीक है, remains will be burned। जो रिमेन्स होंगे, रिमेन्स मतलब काम की लकड़ी, मोटी मोटी लकड़ी, मोटा तना जो है वो निकाल लिया, उसका फर्नीचर बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, घर मकान बनाने में। अब जो पेड़ की छोटी छोटी डाल बची है, जिसका और कोई उपयोग नहीं है, वो वहीं काट के गिर गई। ठीक है, सो रिमेन्स विल बी बर्न। वो जो रिमेन्स उसको क्या करेंगे, जला देंगे। ओके, the ash, okay, will be useful as manure। ठीक है, हालांकि मैन्योर कुछ और होता है, परंतु ये जो राख बची है ना, पेड़ काट के वो सब
झाड़ियां थी वो जला दी, जला दिया तो राख जो है, राख किसका काम करेगी? इट इज यूजफुल एज मैन्योर। ठीक है, वो किसका काम करेगी? मैन्योर का काम करेगी। ठीक है, नाउ देन आफ्टर प्लगिंग, है ना, अब जला दिया, ऐश आ गई, अब इसके बाद क्या करेंगे? प्लगिंग। आफ्टर प्लगिंग बाय सिंपल टूल्स। ठीक है, अब या तो टूल्स होंगे तो प्लगिंग कर देंगे, नहीं होगा तो लकड़ी से ऐसे खोद खोद करके और मिट्टी को निकाल लेंगे, है ना, और उसमें राख ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी। सो एनीवे, so after plugging by simple tools, okay, seeds are sown. Okay, seeds are sown by scattering. So after plugging by simple tools, ठीक है, जो सिंपल टूल्स हैं, PLOU, जो सिंपल टूल्स हैं उससे प्लगिंग करके और उसके बाद में क्या करेंगे? सीड्स को स्कैटर्ड करेंगे। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होगा? बाकायदा ट्रैक्टर के साथ में या जो ऑक्स बैलों के साथ चलने वाला इंस्ट्रूमेंट है, बाकायदा लाइन बाय लाइन क्या करेंगे? एक लाइन से बीज लगाएंगे। गेटिंग इट? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होगा? एक लाइन से बीज नहीं लगाएंगे, बल्कि ऐसे हाथ में बीज रखे और ऐसे स्कैटर्ड कर देंगे। गेटिंग इट? ओके, स्कैटरिंग कर दिया, यहां से ऐसा फेंक दिया, फिर एक कदम बढ़े ऐसा फेंक दिया, एक कदम बढ़े ऐसा फेंक दिया। ओके, दैट इज ऑल। द सीड्स आर सोन बाय स्कैटरिंग। ठीक है, सीड्स को किसके जरिए? स्कैटरिंग के जरिए सीड्स सोन कर देंगे। गॉट इट? नाउ इज देयर एनी डाउट? ओके, सो सीड्स आर सोन बाय स्कैटरिंग। Crops grows, okay, with the help of rainfall. Okay, crops grows with the help of rainfall. बारिश गिर रही है, ठीक है, उसकी मदद से क्रॉप्स ग्रोन होगी। सो क्रॉप्स ग्रोस विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल एंड natural. Crops grows with the help of rainfall and natural fertility of the soil. Okay, so crops grows with the help of rainfall and natural fertility of the soil. ठीक है, तो जो क्रॉप्स ग्रो होगी, है ना, जो फसल की पैदावार है वो पूरी तरीके से नेचुरल फैक्टर पर डिपेंड करती है। व्हाट आर द नेचुरल फैक्टर्स? रेनफॉल, बारिश जितनी होगी अच्छी बात है, जैसी भी होगी अच्छी बात है, जितना पैदा होगा अच्छी बात है, एंड कंप्लीटली डिपेंड ऑन नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। The birds will eat the seeds. Good question, beta. Okay. Now, whenever there is a scattering, स्कैटरिंग बीज बोने का बोला था मैंने, है ना। अब स्कैटरिंग के बाद में क्या करेंगे? उस बीज को वो लोग मिट्टी में दबाएंगे भी। अब मिट्टी में दबाने के लिए क्या करेंगे? एक बार का उस पर हाथ फेर देंगे। ठीक है, तो ये सब काम तो करते हैं, और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सिर्फ मेन चीजें पढ़ेंगे। अभी ईच एंड एवरीथिंग वी कांट स्टडी, है ना। हम ये थोड़ी पढ़ेंगे कि सुबह 5 बजे उठेगा, ब्रश करेगा,
दातुन करेगा, नाश्ता करेगा, फिर खेत में काम करने जाएगा. ओके, तो सर्टेनली दे विल डू समथिंग, ओके, टू सेव दीज ग्रेन्स, ओके, फ्रॉम द बर्ड्स. बर्ड्स से बचाने के लिए वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेंगे. तो नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे सीड्स स्कैटर्ड कर दिए, उसके बाद में उसके ऊपर हाथ फेर देंगे, है ना, या ऐसा लकड़ी या बांस का बहुत लंबा सा टुकड़ा लेंगे, उसको एक बार मिट्टी के ऊपर इधर से उधर फेर देंगे, तो जो बीज होगा उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगी, मिट्टी चढ़ जाएगी. ठीक है, सर्टेनली दे विल डू समथिंग फॉर दैट, बट स्टिल यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, नो डाउट. ठीक है बेटा, क्वेश्चन अच्छा था, बट अगेन वी आर स्टडीइंग नॉट ईच एंड एवरी वन एंड सिंगल थिंग. ओके, मेजर चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, हाँ, व्हाट इट बेटा. सो क्रॉप्स ग्रोस विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ओके, नाउ देन व्हाट इज हैपनिंग. The most important thing is what is happening with this method of agriculture. So certainly what happens, since the farmer is completely depending upon the natural fertility of the soil. Okay, so what happens, since no manure, no extra effort is taken by the farmer, that is the tribal who are doing the shifting cultivation. Okay, so वो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेंगे. ठीक है, सो क्या होगा, आफ्टर पीरियड ऑफ 2 or 3 years द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी. ओके, सो सिंस no effort is taken for improving. Okay, so since no effort is taken for improving the fertility of the soil, I am again repeating, since no effort is taken for improving the fertility of the soil. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि since no effort is taken for improving the fertility of the soil, soil की fertility को improve करने के लिए कोई effort नहीं लिया जा रहा. ठीक है, therefore okay, the land loses its fertility after, okay, 2, 3 or 4 crops. ठीक है, so since no effort is taken for improving the fertility of the soil, therefore the land loses its fertility after 2, 3 or 4 crops. Okay, now the farmer has to move to another part of forest to prepare न्यू फील्ड. ठीक है, अब क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो क्रॉप है, एंटायर कल्टीवेशन was depend on what the natural fertility of the soil.
इवन गोबर का खाद या मैन्योर वगैरह भी मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर ही क्रॉस या क्रॉप डेवलप करेंगे, तो आफ्टर 2 क्रॉप्स, समटाइम्स 3 और 4, अधिक से अधिक 1 बार 2 बार या 4 बार तक फसल लेने के बाद में द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज, okay, so the soil loses its fertility. Then what, the farmer has to move to another part of forest to prepare new field. तो फार्मर क्या करेगा, जंगल के दूसरे हिस्से में जाएगा, जंगल के दूसरे हिस्से में जाएगा, फिर से उस हिस्से में पेड़ों को काट करके गिराएगा, एंड सेम थिंग हैज टू बी रिपीटेड, ओके। वही काम होगा, जो काम की लकड़ियां वो बाहर निकाल ली जाएगी, जो डालें छोटी मोटी बची, जो पत्ता बचा, रेसिड्यू बचा, विच कैन नॉट बी मच यूजफुल, उसको बर्न डाउन कर देंगे, एक बार का उसको प्लगिंग या डिगिंग वगैरह करेंगे, सो दैट एसेज could be mixed up, and then scattering the seeds, and the entire process will start again, okay। so क्या हो रहा है entirely, the farmer has to shift from one part of the forest to another part, therefore it is called as what, shifting cultivation, ठीक है। It is also called as, okay, it is also called as slash and burn agriculture, okay, so it is also called as slash and burn agriculture, ठीक है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को और क्या कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी ये जो है, दीज आर द 2 नेम्स गिवन बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ फार्मिंग। ये जो 2 नाम है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ओके। सो दीज नेम्स आर गिवन on the way the farming is done, but apart from these 2 names, इन 2 नामों के अलावा the shifting cultivation is known by many other names in different parts of the country as well as different parts of the world. संसार के अलग अलग भागों में इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लोकली अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, और हिंदुस्तान के भी अलग अलग कोनों में, ठीक है, अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा, ठीक। एंड दीज नेम्स, ये जो डिफरेंट नेम्स हैं, दैट यू विल स्टडी इन स्टैंडर्ड 10th, ओके। जब आप स्टैंडर्ड 10th में आएंगे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बहुत सारे नाम अलग अलग इलाकों में क्या क्या हैं वो आपको पढ़ने को मिलेगा, और स्टैंडर्ड 9th में हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 आप पढ़ेंगे उसमें भी इसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में डिस्कशन है, एंड देयर आल्सो यू विल रीड द डिफरेंट नेम्स यूज्ड फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। सो अभी के लिए आपको ये 2 नाम हैं, परंतु याद रखिएगा नेक्स्ट ईयर आल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी द सेम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, यदि हमारा सिलेबस में हिस्ट्री चैप्टर 4 रहेगा। वेल, नाउ एज फार एज कंसर्न्ड अबाउट द नोमैडिक हर्डिंग, कौन सी चीज, नोमैडिक हर्डिंग, ओके। सो नोमैडिक हर्डिंग सीधा है कि इन अवर कंट्री देयर आर, सॉरी बेटा, जस्ट आई वांट टू स्टार्ट दिस वन because but the time is just about to over, है ना, it is already 10:50, the next teacher is supposed to begin his or her class, so we are winding up the sessions right now, and I hope that all of you please do the reading of this paragraph of nomadic herding, okay, इसको पढ़ लेना so that when tomorrow will start we are able to complete it in a much fast way, okay। So thank you students, thanks once again, good morning, goodbye.